وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور ترک صدر رجب طیب ایردوان کے درمیان انقرہ کے صدارتی محل میں ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور اہم امور پر تبادلہ خیال، دونوں رہنماؤں کی مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر بھی گفتگو۔ انقرہ کے صدارتی محل میں وزیر اعظم کے اعزاز میں باضابطہ استقبالیہ تقریب، صدر رجب طیب ایردوان نے مرکزی دروازے پر استقبال کیا، دونوں ملکوں کے قومی ترانے بجائے گئے، گارڈ آف آنر پیش۔ وزیر اعظم نے ترک صدر کے ہمراہ گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور ترک صدر رجب طیب ایردوان نے اپنے وفود کا تعارف کرایا۔ مسئلہ کشمیر پر ترکی کے اصولی موقف کو سراہتے ہیں۔ افغانستان کو سنگین انسانی بحران کا سامنا ہے، معاشی استحکام کے لیے منجمد اثاثوں کو فوری بحال کیا جانا چاہیے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ترک وزیر خارجہ مولود چاوش سے گفتگو۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ترک وزیر تجارت اور سرمایہ کار کمپنیوں کے سربراہوں کی ملاقاتیں، تجارتی معاملات کے حل کے لیے مشترکہ ٹاسک فورس کے قیام پر اتفاق۔ پاکستان ایک مضبوط اور بڑی صارف مارکیٹ ہے، ترک صنعت کار سرمایہ کاری کے وسیع مواقع سے استفادہ کریں، وزیر اعظم۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی مصطفیٰ کمال اتا ترک کے مزار پر حاضری، پھول چڑھائے، جدید ترکی کے بانی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اسلام آباد پولیس اور ایف سی کی تنخواہوں، الاؤنسز اور شہداء پیکج کو پنجاب اور خیبر پختونخوا کے برابر کرنے کا فیصلہ۔ اسلام آباد میں جرائم کی روک تھام کے لیے کیمروں کی کوریج 100% کی جائے گی۔ فسادی مارچ کو کسی بھی صورت اسلام آباد میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ شرپسند عناصر اور قانون ہاتھ میں لینے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ۔ پی ٹی آئی لانگ مارچ کے دوران مظاہرین کے ڈی چوک پہنچنے اور پرتشدد واقعات کا معاملہ، سپریم کورٹ نے 7 سوالوں کے جواب طلب کر لیے۔ سیکرٹری داخلہ، چیف کمشنر اسلام آباد، آئی جی پولیس، ڈی جی آئی بی اور ڈی جی آئی ایس آئی سے 7 روز میں رپورٹس طلب۔ 25 مئی کے حکم کے خلاف ورزی کا فیصلہ عدالت خود کرے گی۔ چیف جسٹس امرتا بندیال کی سربراہی میں بینچ کا 4-1 سے اکثریتی فیصلہ۔ جسٹس شاہیہ آفریدی کا اختلافی نوٹ۔ آئندہ مالی سال کا بجٹ 10 جون کو پیش ہوگا۔ صدر مملکت نے قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس 6 جون کو طلب کر لیا۔ پیر کے روز یہ اجلاس دوپہر 4 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا پہلا اجلاس۔ مہنگائی پر قابو پانے اور ضروری اشیاء کی سستے داموں فراہمی کا عزم۔ آٹے کی رعایتی نرخوں پر فراہمی کے لیے اربوں روپے کی سبسڈی دی جائے گی۔ ضلعی سطح پر پرائس کنٹرول کمیٹیوں سے روزانہ کی بنیاد پر رپورٹس طلب۔ Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti arasında bilgi paylaşımı programı çerçeve anlaşması. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı adına Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Sayın İbrahim Şenel, Pakistan İslam Cumhuriyeti Planlama Komisyonu adına Dışişleri Bakanı Sayın Bilavel Bhutto Zerdari. Framework for Knowledge Sharing Program between the Government of Turkey and the Government of the Islamic Republic of Pakistan. Signatories, on behalf of Presidency of Strategy and Budget, Presidency of the Republic of Turkey, His Excellency Mr. Ibrahim Shenel, the President of Strategy and Budget, and
on behalf of the Planning Commission of the Islamic Republic of Pakistan, His Excellency Mr. Bilawal Bhutto Zardari, Minister of Foreign Affairs. Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Pakistan İslam Cumhuriyeti İletişim Bakanlığı arasında karayolu mühendisliği alanında teknik işbirliği mutabakat saptı. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Kara İsmailoğlu, Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti adına Dışişleri Bakanı Sayın Bilawal Bhutto Zardari. Memorandum of Understanding on Highway Engineering between the Ministry of Transport and Infrastructure of the Republic of Turkey and the Ministry of Communications of the Islamic Republic of Pakistan. Signatories, on behalf of the Republic of Turkey, Minister of Transport and Infrastructure, His Excellency Mr. Adil Kara Ismailoğlu, and on behalf of the Islamic Republic of Pakistan, His Excellency Mr. Bilawal Bhutto Zardari, Minister of Foreign Affairs of Pakistan. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti arasındaki ikili ticaret ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi hakkında mutabakat metni. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Ticaret Bakanı Sayın Mehmet Muş, Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti adına Federal Ticaret Bakanı Sayın Syed Navid Kamar. Joint Ministerial Statement on Developing Bilateral Trade and Economic Relations between the Republic of Turkey and the Islamic Republic of Pakistan. Signatories, on behalf of the Republic of Turkey, Minister of Trade, His Excellency Mr. Mehmet Mush, and on behalf of the Islamic Republic of Pakistan, His Excellency Mr. Syed Navid Kamar, Federal Minister of Commerce. Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı arasında teknik işbirliği protokolü. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Nurettin Nebati, Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti adına Dışişleri Bakanı Sayın Bilawal Bhutto Zardari. Technical Cooperation Protocol between the Ministry of Treasury and Finance of the Republic of Turkey and Ministry of Finance of the Islamic Republic of Pakistan. Signatories, on behalf of the Republic of Turkey, Minister of Treasury and Finance, His Excellency Dr. Nuruddin Napati, and on behalf of the Islamic Republic of Pakistan, His Excellency Mr. Bilawal Bhutto Zardari, Minister of Foreign Affairs of Pakistan. Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı arasında borç yönetimi alanında işbirliği yapılmasına ilişkin protokol. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Nurettin Nebati, Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti adına Dışişleri Bakanı Sayın Bilawal Bhutto Zardari. Cooperation Protocol on Debt Management between the Ministry of Treasury and Finance of the Republic of Turkey and the Ministry of Economic Affairs of the Islamic Republic of Pakistan. Signatories, on behalf of the Republic of Turkey, Minister of Treasury and Finance, His Excellency Dr. Nuruddin Nabati, and on behalf of the Islamic Republic of Pakistan, His Excellency Mr. Bilawal Bhutto Zardari, Foreign Minister. Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Pakistan İslam Cumhuriyeti NAYA, Pakistan Konut ve Geliştirme Yetkili Makamı NAFTA arasında konut alanında işbirliği yapılmasına dair mutabakat saptı. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum, Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti adına Dışişleri Bakanı Sayın Bilawal Bhutto Zardari. Memorandum of Understanding between the Ministry of Environment, Urbanization and Climate Change of the Republic of Turkey and Naya Pakistan Housing and Development Authority of the Islamic Republic of Pakistan on cooperation in the field of housing. Signatories, on behalf of the Republic of Turkey, Minister of Environment, Urbanization and Climate Change, His Excellency Mr. Murad Kurum,
and on behalf of the Islamic Republic of Pakistan, His Excellency Mr. Bilawal Bhutto Zardari. Anlaşmaların imza töreni sona ermiştir. Ortak basın toplantısı için sözü Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Başbakan'a bırakıyorum. Arz ederim. Thank you very much. Sayın Başbakan, kıymetli bakanlar ve heyet üyeleri, değerli basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı aziz kardeşim Sayın Şahbaz Şerif'e ve mümtaz heyetine bir kez de sizlerin huzurunda hoş geldiniz diyorum. Sayın Şahbaz Şerif, Başbakanlık görevine gelmesinin ardından ülkemize ilk ziyaretini gerçekleştiriyor. Kıymetli kardeşimi yeni görevinden dolayı tekrar tebrik ediyorum. Türkiye ve Pakistan arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının kökleri tarihin derinliklerine uzanıyor. Güney Asya Müslümanlarının İstiklal Savaşımız sırasında verdiği desteği hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. Çeyizlerini, mücevherlerini milli mücadele yıllarında bizlere bağışlayan Pakistanlı kadınların fedakarlığını asla unutmadık, unutmayız. Bu köklü bağlardan güç alan ilişkilerimiz, Pakistan'ın bağımsız bir devlet olarak kurulduğu 1947 yılından beri dostluk ve kardeşlik temelinde gelişmektedir. Bu sene diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 75. yılını idrak ediyoruz. Bugün değerli kardeşimle yaptığımız baş başa anniversary of our diplomatic relations. With my dear brother, during our tete-a-tete and also interdelegations meetings, we addressed regional and international matters in great detail. At bilateral and international platforms, we have once again reaffirmed our determination to increase the scope of our cooperation. The High-Level Strategic Cooperation Council's consecutive following seventh meeting will be held in our country, and we continue with our work for that. And during the talks we held today, we have come to terms that hopefully and most probably this meeting will take place in September in Pakistan. And the fraternity, close relations, and friendship in between both of our countries will be further strengthened, and we are ready for that. In the field of defense industry with Pakistan, we have had concrete cooperation projects which make us very happy. Within the framework of Milgam project, we have had the manufacturing of jointly manufactured corvettes, 2 in Pakistan and 2 in our country were built, and in line with the set agenda, the construction of these ships are taking place. From 2023 August on, we will be constructing these ships, building these ships mutually. And we have also grown our mutual trade volume, and it has exceeded the figure of $1 billion for the first time after 2010. And our aim is to achieve a figure of $5 billion. In Islamabad, we also signed the Strategic and Economic Framework Agreement from trade to defense industry. We have many good relations for our close cooperation, and this agreement lays the ground of that. Tourism, education, logistics, civil aviation, communication, and ICT-like services industries are the areas we're working to further improve our relations. Mr. Sharif also had talks with the members of our business world, and these talks, these negotiations will contribute, I believe, to our mutual investments.
As Turkey, the driving engine of our economic cooperation are our business people and investors, and we encourage our business people and investors to invest more in Pakistan. For the structuring of FETO in Pakistan, the measures taken deserve a special thanks in our eyes. And I would like to thank to the authorities of Pakistan for their great support. The fallen soldiers in the terror attacks that took place in Pakistan, I remember them with gratitude and pray for the mercy of God on their souls, and I wish a quick recovery on all those wounded. We support Pakistan in their efforts against all types of terror. The fight Pakistan has against terrorism, I definitely believe, will triumph. To ensure stable lasting stability in Afghanistan and to prevent irregular migration, Pakistan has a critical position. The impacts of the humanitarian crisis in Afghanistan was another issue about which we have been jointly exerting efforts. To Afghanistan, we have supplied more than 4 tons of humanitarian goods and food, and we sent many trains to the region, and we continue cooperating with Afghanistan in this regard. Another issue about the region is the Kashmir issue, and in line with the legitimate expectations of our brothers and sisters from Kashmir, we support the solution of the problem in line with the UN resolutions. As I conclude my remarks, I hope that our talks will be auspicious, and I would like to thank to my dear brother, Mr. Sharif, and his delegation for their visit, and in the person of Mr. Prime Minister, I would like to send my deepest greetings to my Pakistani brothers and sisters from here. Thank you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Your Excellency President Rajab Tayyip Erdogan, Honorable Ministers, distinguished members of the media, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I would like to thank my dear brother, President Tayyip Erdogan of the Republic of Turkey, for the very warm welcome and gracious hospitality extended to me and my delegation. Coming back to Turkey is like coming to our own second home. I bring with me the most cordial greetings of the people of Pakistan for our brothers and sisters in Turkey. The relationship between Pakistan and Turkey is embedded in common cultural, religious, and spiritual heritage, transcending boundaries of time, geography, and politics. We look at these relations as a sacred trust that has been passed on to us by our forefathers, and which we are committed to hand over to our succeeding generations. This year, our two countries are celebrating in a befitting manner the 75th anniversary of the establishment of our diplomatic relations. Under my dear brother, President Erdogan's dynamic and visionary leadership, our bilateral relations have scaled to newer heights. I deeply appreciate the sincere, heart-to-heart and productive discussion that we have just had this afternoon. As you are aware, our countries are also engaged in comprehensive discussions at high-level Strategic Cooperation Council meetings, which have become instrumental in fully exploring and building upon our shared interest. I'm very happy to announce that my brother President Tayyip Erdogan has indicated
to hold next session of high-level meeting in Islamabad in the month of September. I'm very grateful, Mr. President, to give us this opportunity to play host to you and to your team members, and we look forward to these very productive meetings, and the people of Pakistan will accord a very warm welcome to you, inshallah. Consequently, we are looking forward to this. Well, we have just dealt with that. A strong business delegation is also visiting Pakistan next June, as has been very kindly indicated by President Tayyip Erdogan, and our team will make proper preparations to hold meetings over there so that we're able to make very solid and productive results. Brother President, there are a number of sectors such as e-commerce, tourism, education, infrastructure development, where Turkey has made exponential progress. And as we discussed this evening, that in the field of hydropower generation and renewable energy, we would be very happy to get support from Turkey in terms of investments. Our Turkish brothers will make investments, make profits, and we will get cheap energy, which will be a very win-win situation. A few days ago, on 20th of May, along with our brother Turkish Defense Minister Hulusi Akar, I participated in the launching ceremony of PNS Badr Miljam Kuwait, another shining example of our wonderful collaboration between our defense industries. We look forward to have further cooperation in attack helicopters and other areas of mutual cooperation. Pakistan and Turkey are natural partners. Many of our challenges are the same as our opportunities. Our two nations have stood by each other in times of need and on issues of core interest. In particular, the people of Pakistan deeply appreciate Your Excellency's steadfast support on the Jammu and Kashmir dispute. Turkey's unflinching support provides great strength to the valiant Kashmiri people who have been subjected to the worst kinds of human rights violation for over 7 decades. I apprised His Excellency, Brother President Tayyip Erdogan, of the threat that Indian action posed to regional peace and stability, including its attempts to change the demographic composition of the occupied territory of Jammu and Kashmir. Pakistan will not abandon its quest for peace, but we are convinced that durable peace in South Asia can only be achieved if the long-standing Jammu and Kashmir dispute is resolved in accordance with the UN Security Council resolutions and the wishes of the Kashmiri people. For its part, Pakistan has always strongly supported the cause of our Turkish Cypriot brethren, and we will continue to support their legitimate rights and aspirations. Pakistan also stands with Turkey in its fight against terrorism, including the threats posed by FETÖ and PKK. Enemies of Turkey are enemies of Pakistan. Distinguished members of the press, our partnership is a force for perpetual good. We have worked together for decades to promote the shared objectives of a peaceful and stable Afghanistan. Our two countries host the largest refugee population in the world,
We are doing so almost exclusively from our own scarce resources. Before I end, Mr. President, let me say something that is very close to our hearts. The emotional bond between our two countries goes beyond conventional interstate relations and diplomatic niceties. It is a bond that is rooted in history, as we have earlier said a few minutes ago, in culture and in the fabric of our two societies. It is a bond that resides deep in our hearts and sits there and will sit there forever. This bond, this unbreakable bond, is unique in that it connects us at all levels and in all layers. Our states, our governments, our institutions, our armed forces, and above all, our people. There are very few examples in today's world of two nations being so closely intertwined and interlinked, and of course interwoven at so many levels for so many genuine and heartwarming reasons. Today, when I stand here or sit here in front of you with my dear brother, President Tayyip Erdogan, I am overwhelmed with emotion at the love that I have received here, my colleagues, and at the love that every Turkish citizen receives from every Pakistani, and vice versa. And for this, I am truly grateful to Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. May He shower His blessings upon all of us. Ameen. Brother President, I thank you once again for inviting us and for the very warm welcome accorded to us at every level of our meeting and receptions since yesterday afternoon. We look forward to welcoming you, Your Excellency, in Pakistan in the month of September, inshallah, and it will give us another opportunity to renew our brotherhood, our fraternal relations, and further strengthen them. We hope you will have time to visit Islamabad, Lahore, Karachi, Peshawar, and Quetta. Pakistan, Turkish friendship, Zindabad. Pak Dosti Zindabad. Thank you very much. वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ फोरम्स पर पाकिस्तान और तुर्की यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पुरतपाक इस्तकबाल पर तुर्क क़यादत का शुक्रिया भी अदा किया। इसके अलावा उन्होंने बताया कि दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी के हवाले से मुस्बत मुज़ाकरात हुए हैं। दोनों रहनुमाओं के दरमियान वन मुलाकात हुई। सदारती महल में वन मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म और तुर्क सदर ने अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर भी बातचीत की। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के एजाज़ में बाज़ाब्ता इस्तकबालिया तक़रीब अंकारा के सदारती महल में हुई। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने वज़ीर-ए-आज़म का मरकजी दरवाजे पर इस्तकबाल किया। इस बारे में तफसील से आगाह करेंगे मोहम्मद मजहर अब्बास। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ तुर्क ऐवान सदर पहुंचे तो उन्हें रिवायती अंदाज में जानिसारी दस्ते ने अपने हिसार में ले लिया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने बाहर आकर अपने खुसूसी मेहमान वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए।
तुर्क फौज के चाको चौबंद दस्ते ने वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मरहबा अस्कर। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ से तुर्क वफद के अरकान का तारुफ करवाया। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से पाकिस्तानी वफद में शामिल अरकान का तारुफ भी कराया गया। इससे पहले वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने वफद के हमरा मुस्तफा कमाल अतातुर्क के मजार पर हाजिरी दी। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मजार पर फूल चढ़ाए। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी, वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, वजीर इतलात मरियम औरंगजेब और वफद में शामिल दूसरे वज़रा भी वजीर आजम के हमरा थे। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तुर्क वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर तिजारत और सरमायाकार कंपनियों के सरबराहान से मुलाकात के दौरान कहा कि सरमायाकार पाकिस्तान में दी गई सहूलियात से फ़ायदा उठाएं। उनका कहना था कि पाकिस्तान में फूड प्रोसेसिंग, ज़राअत, ऑटोमोबाइल, IT, हाइडल, सोलर और विंड एनर्जी समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। तफसीर बताएंगे मोहम्मद नवीर अजहर। अनकरा में तुर्क वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात को मिसाली करार देते हुए कहा कि दोनों मुल्कों के आवाम खसूसी रिश्तों में बंधे हुए हैं। पाकिस्तान और तुर्की ने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। दो तरफा ताल्लुकात की मजबूती में तुर्क वज़ीर ख़ारजा की ज़ाती खिदमात को सराहते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन के अदारा जाती मैकेनिज़्म को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा किया। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बाहमी तजारती हुजम आइंदा 3 सालों में $5 अरब तक ले जाने की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने इस अज़्म का भी इजहार किया कि पाकिस्तान में सरमायाकारी करने वाली तुर्क कंपनियों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। वज़ीर आज़म ने मसला कश्मीर पर तुर्की के असूली मौक़िफ़ पर उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि कश्मीर के अवाम मुनसिफाना जदोजहद में तुर्की के ताउन को इंतहाई कदर की निगाह से देखते हैं। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि वहाँ इंसानी बहरान से निमटने की अशद ज़रूरत है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से तुर्की के वज़ीर तिजारत डॉक्टर महमद मोश ने भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने दो तरफा इक़्तिसादी रवाबत को मज़ीद गहरा करने और कारोबार, तिजारत और सरमायाकारी के हकीकी इम्कानात को बुरवे कर लाने की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि इनके दौरा तुर्की में तुर्क ताजर बरादरी की निशिस्त रखना दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी से मुतल्लिक ताल्लुकात को मजबूत तर बनाने में अहम किरदार अदा करेगी। वज़ीर आज़म ने एशिया की तजारत के मुआहदे को जल्द हतमी शक्ल देने की अहमियत को उजागर करते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि इससे मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा तिजारत के फ़रोग के नए मौके खुलेंगे। वज़ीर आज़म ने दोनों तरफ की कारोबारी बरादरी को अपनी नेटवर्किंग बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तंबुल कार्गो ट्रेन से दोनों जानब के ताजरों को इजाफी मौके मिलेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में सरमायाकारी करने वाली तुर्क कंपनियों के सरबराहों और नुमाइंदों ने भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने तुर्क कंपनियों से कहा कि वो पाकिस्तान में सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों से फायदा उठाएं और अपने कारोबार को वुसअत दें। तुर्क कंपनियों ने वज़ीर आज़म को पाकिस्तान में अपने मौजूदा और आइंदा मंसूबों से आगाह किया। उन्होंने कारोबार में सहूलत फराहम करने पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और तुर्की के मिसाली बरादरान ताल्लुकात को इक्तसादी शराकत दारी में तब्दील करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक मजबूत और बड़ी सारफ मार्केट है जहाँ सरमायाकारों के लिए बेशुमार मौके हैं। वज़ीर आज़म ने तुर्क कंपनियों को पाकिस्तान के ज़राअत, सनत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी करने की दावत दी। तुर्क पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल तुर्की और पाकिस्तानी कंपनियों के लिए कारोबारी मौके की तलाश में सहूलत फराहम करती है। मोहम्मद नवीर अजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि चौथे सनअती इनक़िलाब के तनाज़ुर में चैलेंजेस से निमटना अहमियत का हामिल है। तो कंपनीज तेल और गैस की तलाश, पैदावार और रिफाइनरीज की तामीर में इश्तराक कर सकती हैं। अनकरा में तुर्की पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, ज़राअत, डेयरी फार्मिंग और IT समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की दावत दी। रिपोर्ट करेंगे असदयार खान। तुर्की के फॉरेन इकनॉमिक रिलेशन बोर्ड के तहत पाकिस्तान तुर्की बिजनेस काउंसिल की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथी हैं। दोनों मुल्क मुख्तलिफ शोबों में एक दूसरे से ताउन कर रहे हैं। पाकिस्तान और तुर्की का तिजारती व इक़्तिसादी ताउन हमारे मिसाली बरादराना ताल्लुकात का मज़हर होना चाहिए। What is very important at this point in time is to transform this brotherhood and fraternity into promoting our trade, investment and cultural relations. We have been partners, supporting each other through thick and thin. Your active participation in
investments in Pakistan is highly appreciated. वज़ीर आज़म ने कहा कि दरामदी तेल से चलने वाले थर्मल बिजली घरों से महंगी बिजली पैदा हो रही है। चाहते हैं कि पन बिजली और काबिल तजदीद तवानाई के शोबों में तुर्की की कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। A developing country like Pakistan have to replace our import of very expensive oil and gas by enlarging the scope of hydropower generation and renewable energy. You are one of the world's leading country in building dams and then renewable energy. So your capacity to build dams and hydropower generation should be leveraged by us in Pakistan. वज़ीर आज़म ने कहा कि टेक्सटाइल, IT, ऑटोमोबाइल, ज़राअत और दीगर शोबों में मुश्तरका मंसूबे दोनों मुल्कों के लिए मुफीद साबित होंगे। Pakistan has a buoyant automotive industry, so we can have this wonderful win-win collaboration in this automobile industry. Your textile industry is again, very strong. So again, there can be space and gaps to be filled by joint cooperation in textile. These are milestones to be achieved. Only then will this have a semblance of reflection of our brotherly relations. तामीरात, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स और डेयरी समेत मुख्तलिफ शोबों में तुर्क कंपनियां अब तक पाकिस्तान में $1 अरब की सरमायाकारी कर चुकी हैं। वजीर आजम ने तुर्की के सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत देते हुए यकीन दिलाया कि वीजे के असूल से मुतल्लिक तमाम रुकावटें दूर की जाएंगी। असद यार खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। सदर डॉक्टर आरिफ अली से अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ अली ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस मुलाकात में आईनी और कानूनी उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। सदर डॉक्टर आरिफ अली से अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस मुलाकात में आईनी और कानूनी उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का बजट इजलास 6 जून को तलब कर लिया। आइंदा माली साल का बजट 10 जून को पेश होगा। पीर के रोज ये इजलास दोपहर 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद पुलिस और फ्रंटियर कांस्टेबलरी की तनख्वाहें, अलाउंसेस और शोहदा पैकेज को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मसावी करने का फैसला किया है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की सदारत में होने वाले इजलास में इस्लामाबाद में जराइम की रोकथाम के लिए कैमरों की कवरेज 100% करने का फैसला हुआ। इस इजलास में इस्लामाबाद पुलिस और FC की ऑपरेशनल इस्तेदाद कार बढ़ाने से मुतालिक उमूर का जायजा लिया गया और ये तय पाया कि दोनों फोर्सेस को मजीद माली, तकनीकी वसाइल और लीगल सपोर्ट फराहम की जाएगी। ये फैसला हुआ कि फ्रंटियर कांस्टेबलरी को पुलिस की मावनत के लिए बतौर एंटी रोड फोर्स इस्तेमाल करने और इस सिलसिले में जरूरी तरबियत दी जाएगी। इजलास से खिताब करते हुए वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि फसादी मार्च को किसी सूरत इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा और शरपसंद अनासिर और कानून हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस के शोहदा पैकेज के 1 अरब के बकाया जात फौरी अदा करने की हिदायत भी की। सुप्रीम कोर्ट ने PTI लॉन्ग मार्च के दौरान इस्लामाबाद के डी चौक पहुंचने और वहां पेश आने वाले वाकयात के तनाजुर में सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, IG पुलिस, डायरेक्टर जनरल IB और डायरेक्टर जनरल ISI से 7 सवालोों के जवाबात पर मुश्तमिल रिपोर्ट्स तलब कर ली हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बिन दयाल की तहरीर करदा 12 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में मुतल्लिका हुकाम से पूछा गया है कि इमरान खान ने किस वक्त पार्टी कारकुनों को डी चौक पहुंचने की हिदायत की, हुजूम किस वक्त रुकावटें अबूर करता हुआ डी चौक पहुंचा, क्या मुजाहिरीन बेहंगम अंदाज में या किसी की सरपरस्ती में रेड जोन में दाखिल हो रहे थे, क्या हुकूमत की तरफ से दिलाई गई यकीन दहानियों की खिलाफ वर्जी की गई, रेड जोन में कितने मुजाहिरीन पहुंचे, क्या इंतजामी हुकाम हिफाजती इक़दामात में नरमी ले आए थे, क्या मुजाहिरीन ने कोई बैरियर तोड़ा, तहरीक इंसाफ के कितने मुजाहिरीन G9 और H9 के मैदान में पहुंचे थे, कितने सिविलियन जाबहक और जख्मी हुए और कितने हिरासत में लिए गए। फैसले में कहा गया है कि 25 मई के हुक्म की खिलाफ वर्जी का फैसला अदालत खुद करेगी, जिस पर अलग से समाअत होगी। तमाम मामलात का अदालत ने संजीदगी से जायजा लिया है। बज़ाहिर तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ से दिलाई गई यकीन दहानियों की मुजाहिरीन ने खिलाफ वर्जी की। मुजाहिरीन ने डी चौक पर पहुंचकर इस्लामाबाद के सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। अदालत ने कहा कि इसने मुतादिद वजूहात की बिना पर अटॉर्नी जनरल की तरफ से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ अदालती हुक्म की नाफरमानी से मुतालिक दरखास्त पर एहतियात का मुजाहरा किया। अदालत ने वाज़ेह किया है कि आइन की शिको 9, 15 और 16 जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और आज़ादाना नकलो हरकत और इज्तिमा करने की इजाज़त देता है, ताहम इन तीनों शिकों को यकजा करके पढ़ने की ज़रूरत है। इंतज़ामिया आइन की इन तीनों शिकों पर मफाद आमा को मद्देनज़र रखते हुए अमल दरामद को रेगुलेट कर सकती है।
فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عدالت نے نیک نیتی سے تحریک انصاف اور حکومت کے مابین توازن قائم کرنے کی کوشش کی، تاہم ان کی کوشش کا احترام نہ کرنے پر مایوسی ہوئی۔ عدالت نے واضح کیا کہ تحریک انصاف کی قیادت اور کارکنوں کی طرف سے جلسہ اور جلوس نہ کرنے کے فیصلے اور اسلام آباد کی سڑکیں ٹریفک کے لیے کھولنے کے باعث اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی درخواست غیر مؤثر ہونے کی بنا پر نمٹائی جاتی ہے۔ بینچ کے رکن جسٹس شاہیہ آفریدی نے 2 صفحات پر مشتمل اختلافی نوٹ تحریر کیا۔ جسٹس شاہیہ آفریدی نے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس بات سے متفق نہیں کہ عدالت کے سامنے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کے لیے مواد نہیں۔ جسٹس شاہیہ آفریدی نے اختلافی نوٹ میں عمران خان کی تقریر کا حوالہ دیتے ہوئے سرکاری حکام اور تحقیقاتی ایجنسیوں سے رپورٹ طلب کرنے کی بجائے عدالت کو ٹھوس مواد کی بنا پر عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کرنی چاہیے۔ الیکشن کمیشن نے ممنوعہ فنڈنگ کیس میں تحریک انصاف کو دلائل جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیل بتا رہی ہیں صدف افضل۔ الیکشن کمیشن میں تحریک انصاف فورن فنڈنگ کیس میں پی ٹی آئی کے فائنینشل ایکسپرٹ نے کمیشن کو بتایا کہ صرف 5 بینک اکاؤنٹس میں مرکزی ٹرانزیکشنز ہوئیں، جبکہ اسکروٹنی کمیٹی نے متعدد رقوم 1 سے زائد بار ظاہر کی۔ فائنینشل ایکسپرٹ نے بریفنگ میں موقف اختیار کیا کہ 16 بینک اکاؤنٹس میں سے دیگر اکاؤنٹس لوکل ہیں، ان میں کئی اکاؤنٹس میں ٹرانزیکشنز نہیں ہوئیں۔ فورن فنڈنگ کیس میں دلائل جلد نمٹانے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت کل 12 بجے تک ملتوی کر دی۔ کمیشن کے باہر میڈیا ٹاک کرتے ہوئے درخواست گزار اکبر ایس بابر نے کہا کہ پی ٹی آئی تاخیری حربے استعمال کر کے کیس کو لٹکانا چاہ رہی ہے۔ آج پھر پاکستان تحریک انصاف نے مزید وقت مانگا، ساتھ ان کے وکیل نے یہ بھی کہا کہ کل وہ ان کو بتائیں گے کہ ان کو کتنا وقت چاہیے، اور یہ 8 سال سے کیس اسی طرح چل رہا ہے۔ یہ نہیں چاہتے کہ اپنے آرگومنٹس کو کمپلیٹ کریں تاکہ فیصلہ محفوظ ہو۔ ابھی بھی انہوں نے یہ کہا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی اپیل ہے، اس کے فیصلے کا انتظار کیا جائے، جس کو الیکشن کمیشن نے کنسیڈر نہیں کیا کیونکہ کوئی کسی قسم کا کوئی ریسٹریننگ آرڈر نہیں ہے۔ اکبر ایس بابر نے کہا کہ پشتون عمران خان کی فسادی سیاست کا حصہ نہیں بنیں گے۔ انہوں نے عمران خان کے لانگ مارچ کو مسترد کر دیا۔ صدف افضل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ مذہبی ہم آہنگی کے فروغ کے موضوع پر اسلام آباد میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف اور وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے اپنے خطاب میں کہا کہ آئین ملک کی ترقی، خوشحالی، امن اور اقلیتوں کے حقوق کا محافظ ہے۔ ہم سب نے مل کر پاکستان کو ترقی دینی ہے اور پاکستان کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنانا ہے۔ تفصیل بتائیں گے رانا افتخار احمد۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ پاکستان میں مختلف مذاہب اور نظریات سے تعلق رکھنے والے لوگ باہمی احترام اور ہم آہنگی کے ساتھ مل جل کر پرامن طریقے سے رہ رہے ہیں۔ دنیا میں جتنی بھی اقوام نے ترقی کی ہے، ان سب نے جیو اور جینے دو کی پالیسی پر عمل کی۔ وہاں شخصی اور مذہبی طور پر مکمل آزادیاں دی گئی ہیں۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ آج دنیا کو سب سے بڑا چیلنج یہ درپیش ہے کہ انتہا پسندی کے پھیلاؤ کو کیسے روکا جائے۔ We are lagging behind these groups who are spreading messages of hate on social media. So I think societies have to come together and find out mechanism. دوسرے مقررین نے کہا کہ پاکستان میں بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے مسلسل اقدامات جاری ہیں، کیونکہ پاکستان کا آئین بھی یہاں بسنے والوں کو برابری کے حقوق دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ باہمی احترام اور ہم آہنگی کے درس پر عمل پیرا ہو کر ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، الیکشن کمیشن نے ابتدائی حلقہ بندیوں کی تفصیل جاری کر دی ہے، جس کے مطابق قومی اسمبلی کی 6 نشستیں کم ہو گئی ہیں۔ تفصیل الیکشن سیل کی اس رپورٹ میں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ابتدائی حلقہ بندیوں کی فہرستیں جاری کر دی گئی ہیں، جس کے مطابق قومی اسمبلی کی نشستیں 342 سے کم ہو کر 336 ہو گئیں۔ قومی اسمبلی میں جنرل نشستوں کی تعداد 267 جبکہ خواتین کی نشستیں 60 ہوں گی۔ ایوان زیری میں اقلیتوں کی مخصوص نشستیں 10 ہوں گی۔ پنجاب سے قومی اسمبلی کی جنرل نشستیں 141، سندھ سے قومی اسمبلی کی جنرل نشستیں 61، خیبر پختونخوا سے قومی اسمبلی کی جنرل نشستیں 45، بلوچستان سے قومی اسمبلی کی جنرل نشستیں 16 جبکہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے 3 ہوں گی۔ یہ حلقہ بندیاں آبادی کے اعتبار سے کی گئی ہیں۔ اسلام آباد میں قومی اسمبلی کا ایک حلقہ 6,67,789 ووٹرز پر مشتمل ہوگا۔ پنجاب میں قومی اسمبلی کا ایک حلقہ 7,80,069 ووٹرز پر مشتمل ہوگا۔
सिंध में कौमी असेंबली का एक हल्का 7,84,500 वोटर्स पर मुश्तमिल होगा। खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असेंबली का एक हल्का 7,88,933 वोटर्स पर मुश्तमिल होगा, जबकि बलोचिस्तान में कौमी असेंबली का एक हल्का 7,70,946 वोटर पर मुश्तमिल होगा। नई हल्का बंदियों में फाटा की कौमी असेंबली के 12 हल्के खत्म करके उन पर 6 हल्के बनाए गए हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा में शामिल कर दिए गए। कौमी असेंबली का पहला हल्का NA 1 चित्राल से होगा, जबकि आखिरी हल्का बलोचिस्तान का NA 267 होगा। पंजाब काबीना ने अवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए मुतादिद इकदामात की मंजूरी दे दी है। तफसील बताएंगे ताहिर कलासरा। पंजाब के वजीर आला हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का पहला इजलास। महंगाई पर काबू पाने, एशियाई खुर्दनोश की सस्ते दामों फराहमी और अमन अमान के क़याम के लिए ठोस हिकमत अमली पर अमल दरामद का अज़्म। वजीर आला हमजा शहबाज ने कहा कि अवाम को सस्ते दामों आटे की फराहमी के लिए अरबों रुपए की सब्सिडी फराहम की जाएगी, जबकि चीनी और घी समेत एशियाई खुर्दनोश की कीमतों में इस्तेकाम के लिए जिलाई सतह पर प्राइस कंट्रोल कमेटियों से रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट तलब की जाएगी। काबीना के पहले इजलास में अवामी फलाह के लिए किए जाने वाले इकदाम के बारे में तर्जमान हुकूमत पंजाब अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि इजलास में खैबर पख्तूनख्वा को अवामी मफाद के लिए गंदम फराहम करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि अवाम को डराने धमकाने वालों का सिलसिला और अवामी तरक्की का अमल शुरू हो चुका है। इमरान खान 6 दिन तो क्या 600 दिन में भी वापस नहीं आएगा। काबीना का आज जो फोकस था वो महंगाई को कंट्रोल करना और अमन अमान को बहाल करना और लोगों तक सस्ती अशियाई खुर्दनोश की फराहमी, इसको यकीनी बनाना, ये तरजीहात में शामिल था। जो मुकदमात फरा गोगी साहिबा और दीगर लोग जो करप्शन में मुलव्विस थे, वो अलहदा से जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं जिसके तहत वो मुकदमात होते हैं, उनको देखा जाए। सूबाई वजीर सैयद हसन मुर्तजा ने कहा कि हुकूमत की तमाम तर तवज्जो महंगाई के खात्मे और अमन अमान के क़याम पर है और इस सिलसिले में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। हम समझते हैं कि हमने दूसरों को गाली देकर या दूसरों को चोर चोर कह के अपनी नाअहली नहीं छुपानी। हम इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि हम आवाम को डिलीवर कर पाएँ और अपनी जो हमारी कोशिशें हैं, जो हमारी काविशें हैं, उनको अवाम तक जरूर पहुँचाएँ। सूबाई वज़रा ने दहशतगर्दी और अमन अमान को यकीनी बनाने के लिए पुलिस के किरदार को सराहा। सूबे की तरक्की के लिए तमाम इत्तेहादी जमातों को साथ लेकर चलने के अज़्म का भी इजहार किया। ताहिर कलासरा, PTV न्यूज़, लाहौर। मुशीर बराए उमूर कश्मीर कमर ज़मान कायरा कहते हैं मसला कश्मीर किसी एक जमात का नहीं, मुल्क का मामला है। मुशावरती अमल के जरिए कश्मीर कॉज को आगे बढ़ा सकते हैं। उन्होंने ये बात ऑल पार्टीज मुशावरती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कही। मज़ीद तफसील बताएंगी मरियम मलिक। इस्लामाबाद में मसला कश्मीर पर ऑल पार्टीज मशावरती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। पाकिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर की सियासी क़यादत की मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद। तहरीक आज़ादी कश्मीर को जारी रखने का अज़्म। मुशीर अमूर कश्मीर कमर ज़मान कायरा ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मकबूजा कश्मीर के लोगों ने जान और खून की कुर्बानियां देकर तहरीक को जिंदा रखा है। मसला कश्मीर किसी एक सियासी जमात नहीं बल्कि मुल्क का मामला है। मुशावरती अमल के जरिए मसला कश्मीर को आगे बढ़ाया जाएगा। कौमों की तारीख में ताकत बड़ा खौफनाक फैक्टर होती है और ताकतों के खिलाफ लड़ते हुए बाजू का जद्दोजहदें लंबी होती हैं। हमने जितनी भी कोशिशें की हैं वो अपनी जगह, लेकिन इससे कई गुना और इससे असली जो जद्दोजहद है वो कश्मीरी मकबूजा कश्मीर के हुर्रियत पसंदों ने अपनी जानों के नजराने दे के अपने खून से इस तहरीक को जारी रखा हुआ है। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने कहा कि भारत हिंदुत्व सोच के तहत मकबूजा कश्मीर की डेमोग्राफी तब्दील कर रहा है। भारत मकबूजा कश्मीर में हिंदू वजीर आला लाना चाहता है। अब उनकी ये कोशिश है कि न सिर्फ वहाँ पे कठपुतली हुकूमत बनाई जाए, बल्कि ये जो उन्होंने डेमोग्राफी चेंज की, ये जो वो अब डिलिमिटेशंस कर रहे हैं, वो उनकी कोशिश ये है कि वहाँ पर कोई हिंदू वज़ीर आला लाया जाए और जिस तरह के मोदी की ये कोशिश है, हिंदुत्व की सोच है कि वहाँ पे मसला कश्मीर को ही ख़त्म कर दिया जाए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनीर इलियास का कहना था कि 5 अगस्त को भारत ने मकबूजा कश्मीर का स्टेटस तब्दील किया। मोदी अब शरपसंद अनासिर को कश्मीर में भेजेगा। कश्मीरी सिर्फ और सिर्फ उनके मरकज़ और महवर पाकिस्तान है। कश्मीर जब तक हमारे मुल्क का हिस्सा नहीं बनता हम अधूरे हैं। दुनिया में जितनी भी आज़ादियाँ हुई, रेफरेंडम्स हुए, वो इंसानियत के नाते हुए।
कश्मीरियों के साथ ऐसा जुल्म क्यों? साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल कयूम नियाजी, चौधरी अब्दुल मजीद, राजा फारूक हैदर समेत दीगर हुर्रियत रहनुमा ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि भारत जबर से कश्मीरियों की आवाज को दबा नहीं सकता। आज़ादी के हसूल तक जद्दोजहद जारी रहेगी। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की वहशियाना कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। काबिज फोर्सेज ने रियासती दहशतगर्दी की जारी कार्रवाइयों के दौरान गुज़िश्ता माह मई में 32 बेगुनाह कश्मीरियों को शहीद किया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक 2 नौजवानों को जाली मुकाबले में शहीद किया गया, जबकि भारतीय फौजियों की तरफ से मुजाहिरीन पर ताकत के वहशियाना इस्तेमाल से 26 अफराद जख्मी भी हुए। मुख्तलिफ इलाकों में मुहासरे और तलाशी की 180 कार्रवाइयों के दौरान 92 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिनमें ज्यादातर नौजवान थे। फौजियों ने गुज़िश्ता माह 3 रिहायशी मकान भी तबाह किए। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से एक बयान में भारतीय रियासती दहशतगर्दी में तेजी लाने की शदीद मज़म्मत करते हुए आलमी बरादरी से अपील की कि वो मकबूजा इलाके में इंसानी हुकूक की संगीन सूरत हाल का नोटिस ले और कश्मीरियों को भारतीय मजालिम से बचाने के लिए तनाज़ कश्मीर के हल में किरदार अदा करे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने उधमपुर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हालिया कत्ले-आम ने मकबूजा कश्मीर में अमन और लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने के भारतीय दावों पर सवालिया निशान लगा दिया है। उन्होंने कहा कि पंडितों और मुसलमानों समेत कश्मीरियों को कत्ल किया जा रहा है, ताहम भारतीय काबिज इंतजामिया अब भी इस हकीकत को तस्लीम करने से इनकारी है और क़याम अमन के बुलंदोबांग दावे कर रही है। कश्मीरी पंडितों ने जिला कुलगाम में एक स्कूल टीचर के कत्ल के खिलाफ मुतादिद इलाकों में एहतजाजी मुजाहरे किए। उन्होंने खबरदार किया कि अगर मोदी हुकूमत ने उन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल न किया तो वादी कश्मीर से बड़े पैमाने पर नकल मकानी करेंगे।